Hello, good morning, everyone. How are you all? Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. Very good morning. You need to be energetic during the class. A very nice good morning. Okay, so yes. So guys, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर रीडिंग में 5.5 या 6 पर अटका हुआ है, तो हो सकता है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम विल बी समरी कॉम्प्लेशन, कि आप वो रॉन्ग तरीके से कर रहे हो। आज इस सेशन का गोल है कि मैं आपको कराऊंगी वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो बैंड 7 वाले स्टूडेंट्स सीक्रेटली यूज करते हैं। एंड रिमेंबर, मैं कोई भी आपको रैंडम ट्रिक्स नहीं सिखाती। मैं आपको पैटर्न बताती हूँ, स्ट्रैटेजी बताती हूँ। बिकॉज आइल्स इज ऑल अबाउट अ स्ट्रैटेजी टेस्ट। यहाँ पर आपकी रीडिंग, आप कैसे उसे रीड करते हो, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करके आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट करते हो, दिस इज व्हाट रीडिंग इज। और ये जो समझ गया, उसका स्कोर ऑटोमेटिकली जंप हो जाता है विद एटलीस्ट 1 बैंड। आज के सेशन के बाद, लाइक बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, आप सब लोग समरी कॉम्पिटिशन में कभी भी कोई गेसेस नहीं करोगे। आप प्रिडिक्ट करोगे, ट्रैप को आइडेंटिफाई करोगे, आंसर्स को लोकेट करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वाइल डूइंग दिस, यू शुड फील कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल गोल है, एक्यूरेसी होगी, स्पीड होगी, यू विल बी एबल टू हैव बैंड 7+। वेरी गुड मॉर्निंग मोहम्मद। राइट? अच्छा, कितने लोग हैं जो समरी कॉम्पिटिशन में पूरा पैसेज रीड करते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ट्राई करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर गेस करने लग जाते हैं? यस, हाउ मेनी ऑफ यू? कोई तो होगा, या सबके बैंड Ma'am, 7+ आते हैं? no, ma'am. Sometimes I हम्म। guess, ma'am. यस, तो इसी की वजह से हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। राइट? बिकॉज आइल्स को तुम अप्रोच कर रहे हो स्कूल एग्जाम की तरह, इट्स नॉट अ स्कूल एग्जाम। राइट? कैसे हम इसे प्रैक्टिस करेंगे? वी विल बी डूइंग इट विद लाइव प्रैक्टिस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग संदीप, मेनुका, विशाली, मोनिका। अदरवाइज माई आईज विल बी ऑन द चैट बॉक्स। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो, सबसे पहले समरी कॉम्प्लीशन का फर्स्ट रूल, यू डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट। पैसेज नहीं पढ़ना, सबसे पहले समरी पढ़नी है आपको। समरी इज फर्स्ट, पैसेज तो आएगा बाद में। क्योंकि आइल्स तुम्हें आंसर डायरेक्टली नहीं देगा, तुम्हें हंट करना पड़ेगा। ऑलवेज यू नो दैट, कि हंटिंग तो करनी ही पड़ेगी। कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर इस पैसेज में डायरेक्टली लिखा हुआ एंड यू विल गेट इट। नो, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं होगा। नाउ लिसन टू मी, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे। 5 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे अपने समरी कॉम्प्लीशन को। कविता, I know that you have joined from Nepal. Very good morning to you. Okay, before starting the session, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क मी। यस। Ma'am, I have a question. यस। Ma'am, basically it's about writing module in advantage and disadvantage. हम्म। Uh, you give that outweigh the advantage and disadvantage. In this, we uh, write two paragraph, body paragraph like हम्म। first is advantage, next is disadvantages. हम्म। This is clearly by the outweigh, but हम्म। how can we direct question like advantages and disadvantages like हम्म। when only the question is that this question has advantages mean like disadvantages not uh, retaining outweigh like I got it. You are they only asking question. simply, the question is, what are the advantages, what are the disadvantages of online learning?
right? So in that case, Mohammed, you Yeah. just need to simply write body paragraph 1 about advantage and body paragraph 2 about disadvantage. You need not to show your opinion that you believe that this side is more stronger. You need to have a balanced view. आप किसी की side नहीं हो. The more you talk about, like if you are writing 50 words or 100 words, जितने भी आप ideas लिख रहे हो for your advantage, the same thing you have to go for disadvantage. एक balanced view होता है, उसमें आप कोई अपना opinion show नहीं करते. Because simply आपसे एक question पूछा गया है, what are advantages, what are disadvantages? तो आप advantages भी लिखो, disadvantage भी लिखो, but not any statement which shows that you are on some side. वो आपको नहीं करना, right? Okay. The structure is In same. conclusion, In conclusion also you will be giving a balanced view. आप किसी okay. की side Thanks. नहीं हो. It's a balanced view. Okay? Okay. I Yes. got it. No Thanks. problem. Kavita, our classes are from Monday to Friday, 9 a.m. So you can attend all our classes. The reading module is about to end soon. And I believe from Monday onwards, we will be starting with the listening module. Okay? Again, the course will be started soon. ऐसा नहीं है कि इसके बाद course end हो जाएगा. The new course will be started soon after the listening will over. Okay? Okay. Ma'am, Yes, Mohammed. ma'am, can you discover flow map, sorry, Flow charts for reading? in reading module? Yes, we will be covering. आज हम summary करेंगे and flow chart is little easier. You just need to understand the paraphrasing. But if you believe that you are not able to do it, I will cover flow chart in the sessions also. Okay, in the upcoming session, we will be doing flow chart, matching features. Yes, I got these two queries, so we will be covering it. Okay. कविता बेसिक से स्टडी करने के लिए Okay. मैम सिखा दो मुझे. कैन यू प्लीज स्पीक? यस कविता. Shelly, very good morning. You want to join our classes? Yes, you can regularly attend our classes Monday to Friday. Application में there is a remind me का button. Click on the remind me button so that you can join our class every day. अगर आप क्लिक कर देते हो on the remind me button, you will get notified whenever the class will start, and you do not forget to join. Infinix Math 6, I have question about task 1. Which good option if I write conclusion and overall? There is no conclusion in task 1, dear. We never write conclusions in task 1. Conclusions are for task 2. टास्क 1 में हम कभी भी कंक्लूजन नहीं लिखते. वी ओनली राइट द ओवरव्यू. Yes, Kavita, Monday to Friday you can attend. Okay. What's your name, Smart 6? Okay, no worries. Yes, anybody else? कोई doubt, कोई query है तो please. Okay, Noreen. No? Shall we begin with our topic then? Yes, Sheikh Lamia, please tell. क्या query है आपको? Okay, very good morning. You are from Bangladesh. Achha, does any of you have exam nearby? Any one of you? Very good morning, Mani. Ma'am, me. Okay, when are you planning It's to have your 17 exam? April. 17th of April. Okay. Anybody else? I Just the exam nearby ho? I booked it. You Me, have ma'am. Neeraj. Okay, Neeraj. When is your exam? I haven't booked my exam date, but I think after 20 days I will book my. Okay, you haven't scheduled yet. आपने book तो नहीं करा ना अभी? No, ma'am. No. Okay, Deepika, your exam is already booked? 7th May? Or you are planning for 7th? Okay, if someone's exam is nearby, you can try our baby code visa services, right? You can have your queries so that you can have a better understanding.
of your options. It is for all Ma'am, I Indian have lots students. of Yes, Mohammed, I told you it is not for because you are located in Pakistan. It is only for the students who are located in India. And Yeah. somehow we are also trying for students who are located in Canada also, but only Indian students, like students who are residing in India. Okay, so you can try our visa services. You can have your queries, your options, you can explore. And do not forget to practice using our application, because there are lots of material. You need not to go here and there to search any topic or any type of exercise. Just start practicing. And even you can mention it to your friends, your colleagues. You can share your application, the codes and everything. Okay? Okay, now let's start with. Okay, Vanita, yours is also on 18th of April. Cable ka 11th of April. So yes, you all can try the visa services. You can check out the application, try the visa services. If not, then you can just let me know tomorrow. I'll be sharing your details to the concerned team. Okay, now let's come back to our topic, summary completion. So what we have to do step by step. Step number 1, instructions. Instructions यहाँ पर बहुत important है. Kabita, the session is for 1 hour, 9 to 10 a.m., Monday to Friday. Okay? So when I say instructions, you have to read no more than 3 words, no more than 2 words. Students are very confused with these instructions. 3 words लिखने हैं, no more than 3 words. No more than 3 words का मतलब है कि आप 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते. आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो. It's up to you. नो मोर देन 2 वर्ड्स है, अगेन आप 1 वर्ड लिख सकते हो, 2 वर्ड लिख सकते हो. सो ऑलवेज लुक फॉर योर इंस्ट्रक्शन. नंबर दिया है, वर्ड दिया है, दोनों दिया है. देयर इज अ स्लैश ऑल्सो. नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर. सो दैट मीन्स या आप नंबर लिखो या आप वर्ड और नंबर लिखो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. सो इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत जरूरी है. स्टेप नंबर 2 विल बी रीड समरी. डिटेक्टिव की तरह समरी पढ़ना स्टार्ट करो. जैसे आप लोग कोई सीआईडी ऑफिसर हो, ऐसे वर्ड को रीड करो, उस अपनी समरी को. कीवर्ड्स को सर्कल करो, ब्लैंक्स के आसपास फोकस करो कि क्या ब्लैंक लिखा, क्या हुआ है, बिफोर एंड आफ्टर क्या है. अब जब आप इसे रीड करते हो, रीड करने से आपको हेल्प होती है टू प्रिडिक्ट. यू नीड टू प्रिडिक्ट बिफोर यू फाइंड द आंसर. बैंड 7 वाले स्टूडेंट्स गेसेस नहीं लगाते कभी भी, वो प्रिडिक्ट करते हैं. तो जब आप प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करोगे कि यहां पर क्या आएगा, कैन इट बी अ नाउन, कैन इट बी एडजेक्टिव. नाउन है तो नेम है, नंबर है, डेट है, क्या आएगा यहां पर, राइट. देन नेक्स्ट स्टेप विल बी यू हैव टू स्कैन लाइक अ हंट. अब पैसेज में जंप कर जाओ और सेम वर्ड मत ढूंढो, बिकॉज आपको सिनोनिम मिलेगा. इट्स अ समरी. आपको पता है कि आइल्स इज कंप्लीटली पैराफ्रेजिंग. नाउन्स कैन बी देयर, बट वर्ब्स दी है अगर आपको, कुछ भी एडजेक्टिव्स देयर कैन बी सिनोनिम्स, राइट. अब हीटेड है, हीटेड कुड बी द टेम्परेचर इंक्रीज्ड, तो पैराफ्रेजिंग मिलेगी, सिनोनिम मिलेगी. फास्ट लिखा है, उसका रैपिड दिया होगा. बिग दिया है, आपको सिग्निफिकेंट दिया होगा. Summary completion में you will be having a very detailed paraphrase version and upgraded, I would say. Then next step will be the grammar check. यहां पर आपकी ग्रामर भी थोड़ी सी इवैल्युएट होती है, क्योंकि सेंटेंस फिट होना चाहिए, वरना आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा. सो देर आर 5 स्टेप्स जिसके थ्रू हम अपनी लाइव प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, क्योंकि अभी तक हमने मैचिंग हेडिंग करे, ट्रू फॉल्स करे, इसमें आपको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी होती कि आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सेंटेंस कॉम्प्लेशन, सेंटेंस कॉम्प्लेशन अगर मैं क्लास में कराऊं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम.
बिकॉज आई नो कि अगर आपको पैराफ्रेजिंग आती है, दीज आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड, आप सब कर लोगे. एंड आई बिलीव देर आर 99% स्टूडेंट जिनके सेंटेंस कॉम्प्लीशन के आंसर्स करेक्ट होते हैं. एम आई राइट और रॉन्ग? है कोई ऐसा जिसके सेंटेंस कॉम्प्लीशन रॉन्ग होते हो? आई बिलीव दे आर इजी टू फाइंड. फिर भी कोई है तो प्लीज लेट मी नो जिसके सेंटेंस कॉम्प्लीशन भी रॉन्ग होते हो. यस होता है एनीवन? मैम, लेकिन दूसरा से थोड़ा कम होता है इसमें. Yes. So because I believe that these are the easiest one. लेकिन summary completion it is tricky. So आप summary को कैसे read करोगे? Like a detective. कि आपको कुछ find out करना है, आप CID ऑफिसर बन गए हो यहाँ पर, right? Then जब आप read करना start करोगे, you need to predict. Prediction बहुत जरूरी है. The prediction technique you can apply in your sentence completion also. कोई भी fill in the blanks आए, आप वहां पे prediction की technique लगाओ. And then you have to scan your whole paragraph. अब स्कैनिंग कैसे करते हैं हम? जल्दी जल्दी, राइट? स्किमिंग में हम पूरा रीड करते हैं, वी रीड इट वेरी क्विकली टू गेट द मेन आइडिया, बट यहां पर आपको क्या करना है? स्कैन करना है. नाउ लेट्स डू अ लाइव प्रैक्टिस. You all can open your application also. I hope the passage is visible to all. Kavita, I hope you know that what I'm teaching today. And even on the application, you get all the information about the session. कि आज का session किसका है and what will be the tomorrow's part. Sheikh, if you want to learn speaking and reading, तो reading already चल रहा है. Speaking के module, the speaking module is already done. You have to wait for the new course. Otherwise, you can check our classes, जो application में already given है. Okay, now let's see the summary completion. Yes. So can you spot the questions here? 27 to 29. The Yes, ma'am. Yes, the Olympic torch. अब देखो, जब भी आपको summary completion, sentence completion ये वाले questions मिलेंगे, you will be provided with a word limit. Always. Complete the summary below using no more than 3 words from the passage. अब words आपके, sometimes you get a summary जिसमें आपको options भी मिलते हैं, and sometimes they are without options. तो अगर आपकी विदाउट ऑप्शंस है ना, अगर आपको पैसेज में से फाइंड करना है, यू आर लकी. क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपको पैराग्राफ में से वो वर्ड फाइंड करना पड़ता है जिसका पैराफ्रेज वर्जन यहां पे आपको ऑप्शंस की फॉर्म में गिवन होता है, देन इट इज लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो. क्योंकि आप पैसेज में से वर्ड को फाइंड करोगे, देन आप उसका सिनोनिम उस ऑप्शंस में चेक करोगे, यू मे नॉट गेट द सेम वन. सो यू आर लकी अगर आपके पास ऑप्शंस वाला नहीं है, आपको डायरेक्टली पैसेज में से फाइंड करके अपने आंसर को लिखना है. नाउ व्हाट आर स्टेप्स विल बी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीड जो हमने करा. नो मोर देन 3 वर्ड्स. तो हम 3 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं लिखेंगे. 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं. नाउ वी हैव टू रीड अ समरी. समरी कहां पर गिवन है? यहां पर. कहां है समरी गिवन? कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? वेयर इज समरी? Who can help me with the reading of summary? Yes, Mohammed, can you help me out? Yeah, ma'am. Please read. Ma'am, question or paragraph passage? That is what my question is कि summary कहाँ है? That question is the summary. Yes, Okay, I check out. exactly. Given. This is the summary. You need to understand, ये जो आपका पूरा passage है ना, इसकी summary यहाँ पर given है. So आपको इसको पहले read करना है. जब आप इसे रीड करोगे, देन यू विल गेट एन आइडिया कि आपको पैराग्राफ में कहां जंप करके जाना है, कहां पर स्कैनिंग करनी है. यस, अ गर्ल हु सेड कि मैम क्वेश्चंस है समरी, हु वाज शी? सॉरी, आई मिस्ड आउट द नेम. Vaishali. यस, वैशाली, कैन यू प्लीज रीड इट फॉर मी? Okay.
So the Olympic torch, as requested by the Olympic Committee, will be carefully designed so that it is capable of withstanding all kinds of Hmm. So generally. what are the keywords here? All kinds of. कैसे डिजाइन की है कि वो कैपेबल है. ओलंपिक टॉर्च. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, समरी को समझना बहुत जरूरी है. उसे ऐसे रीड करो. एज आई टोल्ड यू, समरी को रीड करो, सर्कल्स करो कीवर्ड को. इफ यू आर अ पेपर बेस्ड, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड हो तो आप ऐसे ही वहां पर येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो एग्जाम में. ब्लैंक्स के आसपास फोकस करना बहुत जरूरी है. विद स्टैंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ, कुछ ऐसा है वहां पर पैराग्राफ में जिसमें ऑल काइंड्स की बात हो रही है. सो कैसे उसे डिजाइन किया गया है? प्लीज रीड, मूव फॉरवर्ड. The design of modern Olympic torch enjoys the value. The torch must be So copied and generally, the design of modern Olympic torch enjoys the dash value. अब डिजाइन की बात हो रही है कि जो डिजाइन है मॉडर्न ओलंपिक टॉर्च का, कैसी वैल्यू को एंजॉय करता है. एंजॉयज द डैश वैल्यू. आपको सिमिलर, देखो ट्रैप्स होते हैं कुछ सिमिलर वर्ड्स के. सबसे डेंजर पार्ट यही है आइल्स में. वर्ड लिमिट, सिमिलर वर्ड्स, ग्रामर के ट्रैप, और एक जो आप जल्दी जल्दी में गेसेस कर देते हो, गलत जगह से उठा के आंसर को राइट डाउन करना. सो इन ट्रैप से आपको बचना है. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी वैल्यू है. राइट, दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट सम वैल्यू. तो वो आपको फाइंड आउट करना है पैसेज में कि वो कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, कौन से काइंड की, वो क्या है. इट कैन बी अ नाउन ऑल्सो हियर. Next, the torch must be copied and thousands of torches are constructed to accommodate thousands of runners who will carry them through each leg of the Olympic relay. Each runner has an opportunity to purchase the torch and at the end of his or her leg of the relay. To purchase the torch as in, कैसे परचेज करते हैं वो? यस, क्या हो सकता है यहां पर? कोई सजेशन, कोई गेस? Ma'am, यस. its place are sure. सॉरी. Ma'am, it's maybe place like opportunity to purchase the torch as an. नो, एज अ डैश. इट्स अ नाउन अगेन. num as an at the end of his or leg of the relay. टॉर्च को परचेज किया जा रहा है एज अ डैश. टॉर्च को कैसे परचेज किया जा रहा है? एज अ डैश. वाई दे बाई इट, क्यों बाय कर रहे हैं वो, क्यों परचेज कर रहे हैं? यू नीड टू फाइंड इट. नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्कैनिंग. हंट करना स्टार्ट करो. फर्स्ट इज कि डिजाइन की बात हो रही है, केयरफुली डिजाइन किया जा रहा है उसे विद ऑल काइंड्स ऑफ व्हाट. यस लावण्या. You have a query, please Ma'am, let. 28 has answer aesthetic and practical value. Okay, let's others also find out. Can you tell us, help us in finding? Where did you get it? It is in the second paragraph, last line, somewhere. Uh-huh. Second paragraph. So this is the second paragraph. Yes. So where is the answer number No, one? maybe the third paragraph it is. Why you're saying maybe you are not sure? Yes, it is in the third. I have seen it. Okay. Yes. So what is the answer number In one? seventh line, it is written clearly. Yes. Start Ma'am, finding the first one. Yes. You need to first find answer would be severe weather, I think. All kinds of severe weather. It is there in the third paragraph itself. why it will be severe weather.
You need to look for your keywords, start hunting. Why it is severe weather conditions? Who will explain? I need an explanation. You have to locate in the passage. आपका question क्या है? The Olympic torch, as requested by the Olympic Committee, will be carefully designed so that it is capable of withstanding. That means going through all sorts of dash. Yes. So all kind means all sorts of Weather all sorts conditions. of what? कैसे डिजाइन की गई है? Once you start reading this paragraph, this talk about the designing part. All kinds of. Yes. So they are talking about what? They're talking about the designing part कि Olympic torch की designing कैसे हो रही है? Yes, ma'am. After the Yes, torch ma'am. is completed, it has to succeed in going through all sorts of. So all sorts of means all All kinds kinds All of. kinds of. And Just what? weather All also. kinds of what? Severe weather conditions. Clear? So first answer will be severe weather conditions. You can even write weather conditions. That will be also correct. If you want to write severe weather conditions, that is also correct because you have 3 words. So आप 3 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं लिखोगे, आप 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो. दैट इज करेक्ट. ठीक है. सो पैसेज इट क्लियरली टॉक्स अबाउट वेदर कंडीशन. यू नीड टू, अगर आपने समरी अच्छे से रीड करी है, यू विल बी एबल टू लोकेट योर आंसर वेरी क्विकली. बट अगर आपने समरी में अपनी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड नहीं करा, इवन इफ आई मिस्ड आउट दिस ऑल काइंड्स ऑफ, कि ऑल काइंड्स ही तो लिखा है, देन आई विल नॉट एबल टू गेट माई आंसर करेक्ट. नाउ रीड द नेक्स्ट वन. दे आर टॉकिंग अबाउट द Ma'am, डिजाइनिंग पार्ट. यस. it's about aesthetic and practical value. तो जो Complete. डिजाइन है मॉडर्न ओलंपिक टॉर्च का, इट एंजॉयज व्हाट? डिजाइन की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है. दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ डिजाइन. व्हिच पैराग्राफ Ma'am, हैव दिस आंसर? द सेम वन और ma'am, द डिफरेंट वन? Same The same paragraph, paragraph, seventh just line. above. It's just above, right? Because they're talking about the designing for a torch is here. So how? कैसे पता लगेगा? What they enjoys the dash value? कैसी वैल्यू है उसकी? Aesthetic and practical value. Practical. So value is already given here. We can write the 3 words. Aesthetic and practical. Right? If you write only aesthetic, it's a half answer. Remember this. जब भी आपके पास 3 words का आंसर आता है, you can write more. It's not that you have to write 1 या 2. आपको allowed है, but जब आपके पास 3 words का limit है, why to write less? Okay? So write the exact word. And इसमें हम कोई भी changes नहीं करेंगे when we are writing. We will be writing the whole simply जो यहाँ पर लिखा है exactly वहीं पे copy कर देंगे. Aesthetic and practical. Clear? Next one. Each runner has an opportunity to purchase the torch at the end of his or her leg of the relay. Yes. You need to, step will be keywords कौन से होंगे? Purchase, torch, why they buy it. अब आपको चेक करना है कि कहां पे टॉर्च का बाय, परचेज वाला पार्ट गिवन है. Ma'am, can you scroll down? Yes, yes, definitely. Why not? The answers for the summaries are always nearby. ma'am, it's fourth one. Buy is our Yeah, torch that as will buy as a desirable Just souvenir. give me 1 minute. Find it out. Just give me 1 minute. it's fourth one, second last. Desirable souvenir.
Yeah, So what's the answer? ma'am, it's Preferable winner. second last line. Why? Why is this the answer? Basically, ma'am, it show the why every single runner can choose to Hmm. buy his art Yes. torch at So specific every single means they are talking about each runner. They has an opportunity to purchase, that means they can choose to buy. Can you see the paraphrasing कैसे दिए? Every single runner, that means each runner has an opportunity, that means they can choose to buy his or her torch as a treasurable souvenir when he or she finishes his or her part of the relay. And that is what given in our statement. Right? Purchase the torch as a, buy his or her torch as a. So it's a direct copy. You just need to identify that paraphrasing. And I don't believe कि ये इतनी difficult paraphrasing है that you do not catch it. Right? So what Yes, will be ma'am. the Yes, answer? ma'am. Treasurable Treasurable souvenir. souvenir. So I'm writing the answers. And always check the spellings when you write. क्योंकि अगर आपकी spelling wrong हुई, then your answer will be incorrect. लिसनिंग में तो पेपर बेस में यू हैव टाइम, बट यहां पर आपके पास टाइम नहीं होगा. Even if you write weather conditions, that is also correct. अगर आप severe weather conditions लिखोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है. ओके, वो आंसर्स यहां पर सिर्फ हाफ गिवन है, बट दीज आर करेक्ट. ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है. आई विल चेक विद द टीम कि ये क्यों टेक्निकल ग्लिच आ रहा है. सेवियर वेदर कंडीशंस इज आल्सो करेक्ट. वेदर कंडीशंस लिखोगे तब भी करेक्ट है. एस्थेटिकल सॉरी, एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल पूरा लिखना है आपको, नॉट ओनली एस्थेटिक वैल्यू. ठीक है. ट्रेजरेबल सोवेनियर भी लिख सकते हो आप, सोवेनियर भी लिख सकते हो. दैट इज करेक्ट. क्लियर? यस एवरीवन? Yes, Clear, please. ma'am. Yes, ma'am. Thank you. यस. Yes, तो ma'am. Clear. आपको चेक करना है कि देखो क्वेश्चन 1 पैराफ्रेज था, फुल फ्रेज है ना. क्वेश्चन 2 Ma'am, एग्जैक्ट. why it is shown wrong in that answer? तो दैट इज फ्रॉम द टेक्निकल टीम पार्ट, वहां पर वो आंसर गलत है, अदरवाइज दैट इज करेक्ट. ये देखो, मे बी द आंसर्स पीछे से जो उसमें गिवन है दैट विल बी रॉन्ग, अदरवाइज दिस इज करेक्ट. ठीक है. सोवेनियर भी करेक्ट है, ट्रेजरेबल सोवेनियर भी करेक्ट है, बट एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल पूरा लिखना है वैल्यू के बारे में. दैट्स द टू दे आर टॉकिंग अबाउट, एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल वैल्यू. एग्जाम में यू नीड टू प्रोवाइड बोथ. सेवियर वेदर कंडीशंस और वेदर कंडीशंस भी करेक्ट है, दोनों आंसर्स करेक्ट है. ओके, आई विल गेट इट रेक्टिफाई बाय द टीम टुडे इटसेल्फ. यस. क्वेश्चन 3 में हमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर मिला. सो लोकेट करो, मैच करो, कॉपी करो द एग्जैक्ट, जो आपको पता है कि दीज वर्ड्स वी डू नॉट हैव सिनोनिम ऑफ दिस. नाउन का कोई सिनोनिम नहीं मिलेगा आपको. राइट. नाउ लेट्स डू वन मोर. मैम वो जो जैसे नाउन आएगा इसमें वर्ब आएगा तो how can we identify those things? देखो विशाली, डू यू थिंक कि नाउन चेंज हो जाएगा? नेम चेंज करेंगे वो? नहीं मैम. नहीं करेंगे. नंबर्स चेंज करेंगे वो? नहीं डेट्स मैम. चेंज करेंगे वो? नहीं करेंगे. सो दीज थिंग्स विल नॉट चेंज. ठीक है. मैम यस. मैम एक पहली थी कि जो आंसर आते हैं वो इन ऑर्डर में आते हैं या एनी गिवन आते हैं? सॉरी, तो ब्लैंक्स के आंसर आते हैं वो इन ऑर्डर में आते हैं, जो अभी आज था तो समरी 27 का. कॉम्प्लीशन.
You're talking Yes, ma'am. about summary completion that we always find mostly summary is in order. Yes, one after the another. But sometimes पता है क्या होता है, अभी तो you got it in the, usually it is in either in the beginning of the paragraphs, या तो आपको summary beginning के paragraphs में मिलेगी या फिर end के paragraphs में. बट आई हैव केम अक्रॉस सम पैसेजेस जब आपको मिड में भी मिल जाती है, तो इसीलिए आई डोंट वांट टू गिव यू दिस काइंड ऑफ कि हाँ नहीं सिर्फ अपर पैराग्राफ्स को रीड करो या सिर्फ बिलो पैराग्राफ्स को रीड करो. इसीलिए आई नेवर taught my student like this. You just need to do the scanning part very quickly. बिकॉज गलती से भी अगर कोई ऐसा पैसेज आपने करा जिसके आंसर्स आपको मिड में मिले, देन यू विल आस्क मी मैम कि नहीं इस पैसेज के आंसर्स तो मुझे मिड ऑफ द पैराग्राफ्स में मिले. एंड इवन आई हैव केम अक्रॉस सम ऑफ द पैसेजेस जिसमें मिड में भी दे देते हैं वो लोग. सो वी आर नॉट श्योर. यूजुअली इट इज इन द बिगनिंग और बाय द एंड ऑफ द पैराग्राफ, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स या बिगनिंग के 2 पैराग्राफ्स. So your first approach can be that you will go for this thing, but do not miss out. Miss नहीं करना कि सिर्फ उन्हीं पैराग्राफ्स में ढूंढते रहो. you अगर आपने अपनी समरी को रीड करा है अच्छे से, you will be able to find out all. देखो समरी is mostly in the end. ठीक है, अब हम यहाँ पे भी समरी करेंगे तो it is 7 to 10. तो जब आप अपने ये पहले वाले, कभी भी 1 to 6 में आपको समरी नहीं देते. रिमेंबर दिस. रीडिंग मॉड्यूल टेस्ट पेपर जब भी आता है तो 1 to 6 में आपको समरी नहीं मिलेगी. 1 to 6 में हमेशा आपको ट्रू फॉल्स और इधर इट कैन बी अबाउट सेंटेंस कॉम्प्लीशन या कोई और टाइप्स मिलेगा. तो जब आप इन्हें फाइंड करना स्टार्ट करते हो, यू हैव ऑलरेडी रेड योर पैसेज. आधा पैसेज आप बहुत अच्छे से रीड कर चुके होते हो. So when it comes to summary, you will be easily finding your answers, but you need to apply the right approach. Okay? Noor, my voice is not audible to you only. Yes. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay, Noor, ma'am. please check your connectivity then. Okay, now let's do this passage. Question number 7 to 10. Read the following summary of the paragraph using no more than 3 words. Who will read for me? Please help me out. Shall I read, ma'am? Yes, please. Why not? After the training of irony, parrot Alex can use his vocal tract to pronounce more than something. Then while other scientists believe that animals have no this देखो, reading advanced does ability not of mean thinking. just only do the reading part. Reading for understanding is our task. अगर हमने first Okay. statement read करा, what do we understand? What do we need to find it? We are not reading a novel तो पढ़ते गए कुछ पता नहीं लगा. We are reading a summary. Yes. Detective बन सकते हो सब लोग. I believe you should be good at this. तो आपको summary ऐसे read करनी है. You need to find out. आपको find करना है कुछ, उसको read करके. So reading and comprehending is the most important task for reading module. आपको पता है reading module is the backbone. अगर आपकी reading अच्छी है, आपकी listening भी अच्छी हो जाएगी, आपकी writing भी अच्छी हो जाएगी, आपकी speaking भी अच्छी हो जाएगी. So make a habit of reading every day. Yes, तो first one क्या है? Vocal tract to pronounce more than dash. सबसे पहले तो हमारा कीवर्ड क्या है? वोकल ट्रैक. अब क्या प्रोनाउंस किया जाता है? मोर देन. मोर देन मीन्स numbers में. इट कैन बी अ नंबर. Yeah. सो वी हैव टू प्रिडिक्ट. नाउन है, नंबर है, क्या है वहां पर. While other scientists believe that animals have no this advanced ability of thinking, they would rather teach dash. कुछ पढ़ाते होंगे. अब साइंटिस्ट भी है, Sound. टीच भी है. तो क्या टीच करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है.
Pepperberg clarified that she language sound wanted which to is given. conduct a study concerning dash. Pepperberg ने क्या clarify किया कि she wanted to conduct a study concerning, किससे related है वो study? अगेन अ नाउन, आपको वो नाम फाइंड आउट करना है कि वो स्टडी किससे रिलेटेड है, बट नॉट टू टीच हिम टू टॉक. स्टोर असिस्टेंट, अब स्टोर असिस्टेंट की बात आ रही है. पिक्ड आउट अ बर्ड एट रैंडम फॉर her for the sake of avoiding other scientists saying that bird is dash afterwards. A bird कैसी है? Bird is, you need to find out. It can be adjective also. Bird is dash. So who will help me in finding? कहाँ मिलेगा मुझे ये? You have to find out with the local track to pronounce more than dash. अभी तो नीचे जाना पड़ेगा आई थिंक. कैन यू प्लीज स्क्रॉल? First paragraph. First para. Okay. Where in the first paragraph? Did you find the word vocal tract here? No. No, ma'am. Why will I read my first paragraph when I did not find a single word? Second paragraph. To pronounce more than. You may get a synonym of more than, you may get a synonym of pronounce, but vocal tract. Okay, so first two paragraphs do not have that. Please mute yourself. Now I'm applying my technique. First two paragraph does not have it. Can I look for the last two paragraphs? Yes, ma'am. Yes, sure. Okay. So this is the last paragraph. Can I find the word vocal tract here? Pronounce more than. Pepperberg is here. So I'm just highlighting. Pepperberg, they're talking about Pepperberg here. Ma'am, in that paragraph, Alex to pronounce some sounds such as ba. Which one? This paragraph? Yes, ma'am. First line. In Mhm. other words, because Alex could do it. Some English phrases, but are they talking about the vocal tract? No. No, ma'am. We have a keyword. Parrot Last. LH can use his vocal tract. तो वो parrot LH जो है वो vocal tract use कर रहा है to pronounce more than dash. So parrot LX की बात हो रही है, but what about the vocal tract? वो कहाँ है? You need to scan vocal tract here. Now start reading before and after and you will get your answer. It is given nearly 100. 100 English. Yes. अगर आप vocal tract को miss कर दोगे and you only focus कि कुछ pronounce किया जा रहा है more than words and this and that, answer wrong हो जाएगा. Your keyword is कि parrot Alex ने use करा अपनी vocal tract को to pronounce more than. So more than is nearly, duplicates nearly 100 English words. Now, how will you write 100 English words? Nearly is more than, right? Nearly is pronounce more than. It's duplicate nearly 100 English words. Second one, we got our first answer. While others, अब ये वाला It आंसर हमें was कहाँ in the मिला? first Wait, just paragraph. give me 1 minute. ये आंसर हमें कहाँ मिला? Not in the last 3 paragraphs. See, 1, 2 and 3. तीनों में नहीं था. We got it in the last 4th paragraph. So that is why I don't want to give you these kind of strategies कि नहीं सिर्फ पहले 2 में या last 2 में find out करो. It's not always like that. You just need to go for this first thing. तब आपको answers मिलने start होंगे. Now what will be the second one? They would rather teach Ma'am, dash. it is given in the first paragraph, second one. Where it is given? Ma'am,
In the Just one first more thing. paragraph. Ma'am, for answer 7, we have this 100 English words. No, so these words, like 4 words, it will be. We don't have to write more than 3 words. So we Yes. should write 100 as digit 100 Even if and then देखो English word. यहाँ पर I guess the instructions are wrong. No more than 3 words and और a number होना चाहिए था यहाँ पर. तब आप 100 को number की form में लिख सकते हो. Otherwise it will be 4 words. Yes, Right? yes. 100 Yeah. को आप number की form में लिखोगे, यहाँ slash करके number आएगा. There are some errors, so I will rectify because I'm coming across this. 100, you will write like this. I'm writing so that you know. Okay? Yeah, ma'am. Otherwise, it will be counted as 4 words, which you are not allowed to write. Next one. Yes. They In the would first rather paragraph. teach. Yes. Which statement scientists is it? First First paragraph? paragraph. Yes. Here. Last fourth line. Last fourth. third, sorry. What the answer is? Alex into her lab to teach the English language sound. Why this is the answer? Who is speaking? Yes. What's your name? Ma'am Lavanya. Lavanya, are they talking about some scientists here? Yes, it is given. तो क्या बात While हो the रही है other यहाँ पर? scientists believe हाँ. that animal has no this advanced ability of thinking, they could rather teach him English language sounds, and it is given for her lab. The first statement is connected to the second one. How can you come here for the answer? How can you come here for the answer? Ma'am, second paragraph, many scientists believe that animal lacked. वहाँ पे आंसर. Guys, यहाँ पर एक comma given है. Not a full stop, man. Exactly. And summary is not like this. It is interconnected. How can you say यहाँ पे comma है? They are two same. They are connected statements. After the training of RNA, parrot Alex can use his vocal tract. तो vocal tract की बात तो यहाँ पर हो रही है. Yes, what will be the answer? Yes, Kushal, did you find it? No, ma'am. Please scroll down. Yes. Vocal cord. They're actually making a comparison while other scientists believe that animals have no this advanced ability of thinking, they would rather teach. कि animals में तो ये advanced ability नहीं है सोचने की, तो they would rather teach. किसे teach करें वो? Language. Sorry? Opening his lips and speaking. Yes. Sign Somebody was language and speaking. symbols. Answer should be Symbol. sign language, comma, symbols, I guess. मतलब वो teach करे sign language को और symbol को. Try to understand. आप मीनिंग ही नहीं समझ रहे स्टेटमेंट का. While other scientists believe, साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि एनिमल्स उनके अंदर ये एडवांस एबिलिटी नहीं है सोचने की, तो वो किसे पढ़ाएं? They would rather teach. Chimpanzees, bonobos, Exactly. comma, gorillas. Chimpanzees. Despite their inability. So despite means while. While their inability to communicate. अब inability to communicate किसकी बात कर रहे हैं? Animals की. Scientists consider chimpanzees to be an exceptional subjects. So वो किसे पढ़ाना चाहेंगे? Subjects means they want to teach. They would rather teach chimpanzees now. So the answer would be just chimpanzees, or we would Yes, also include bonobos, comma, gorillas as it's No. Chimpanzees. They straight away said scientists consider chimpanzees to be an exceptional subject. Experience. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
You have to find that exact Okay, line ma'am. जहाँ पे वो comparison है. अगर आप summary को read नहीं कर रहे, you are not reading the statement, you are not comprehending कि वहां पे पूछा क्या जा रहा है. How will you find out? साइंटिस्ट ने क्या बिलीव करा यहाँ पर? They did not believe in Alex की वो type learning वाला, so they preferred working with chimpanzees. Right? So answers is chimpanzees. Next, Pepperberg clarified that she wanted to conduct a study concerning. Ma'am, so sorry to interrupt. Just let me, like, I joined the class late. So may I know, like, the answers won't be in order, like when it comes to summary completion, right? No, it will not be in Okay. order, but yes, it will be near about. Somewhat interconnected. Okay, ma'am. Yes, Thank you. yes, We can yes. just continue the next answer. Yes. Pepperberg clarified that she wanted to conduct a study concerning dash. So she wanted to conduct a study concerning what? कौन सी स्टडी करानी थी उसे? But not to teach him to talk. क्या थे पेपरबर्ग के थॉट्स? What was her aim? Could you just scroll the paragraph? Yes. Now look for Pepperberg. Pepperberg is here. Pepperberg. कौन सी स्टडी करानी थी? अब स्टडी से रिलेटेड आपको कोई सिनोनिम भी मिल सकता है. इट्स नॉट दैट कि आपको सेम वर्ड मिले. There is a third last line stating that I am not evaluating Alex's ability to acquire human language. This This has has never been never been relevant. relevant. My goal. So my means Pepperberg is talking. My goal was always to use his imitative abilities to gain a greater knowledge of aviation cognition. What does this means? The answer would be avian cognition. Exactly. Answer would उसका be The purpose imitative ability to क्या ability. था? fly. I mean, उसका that's the purpose meaning. क्या था? His purpose was avian cognition. So he was gaining knowledge of means study concerning. There's a paraphrase statement. Greater knowledge. उसका goal क्या था? What does he clarify? That she wanted to conduct a study, gain a knowledge of cognition. Yes. Got the answer? Yes, ma'am. Now find out the next one. The store Ma'am, please assistant repeat the ninth one. The goal was always so sorry. My goal was always. So my means they're talking about Pepperberg. ये Pepperberg यहाँ पे बात कर रहा है ना. Pepperberg noted after saying 7 dozens in a row for Alex, this and this. तो Pepperberg बात कर रहा है यहाँ पे. He's talking, he's writing his views, and what he's saying that what she's saying that she wanted to conduct a study concerning. So study का क्या synonym paraphrase version दिया है? Gain a greater knowledge of. She always wanted to conduct a study. हमेशा Okay, उसे एक ma'am. study करानी थी. That means she wants to always have a greater knowledge of avian cognition. Okay, ma'am. Okay. Yes. Now see the next one. The store assistant pick out a bird at random for the sake of avoiding other scientists saying that bird is dash afterwards. Bird कैसी है? You have to find out. Is this paragraph talks about bird? Ma'am, birds is there in fourth line. Here? Store assistant picked out a bird at random
check the store assistant also. It can be our keyword. We need to find it out. Is it possible to erase the markings on the screen, the green ones? Just give me a second. Yes. Find out store assistant. This is our main important keyword here. Without this, we can't go ahead. Store assistant, stores employees is here. Passage only, ma'am. Sorry, which Yeah, paragraph? last line. The same paragraph? Store assistant, last line. Yeah, here only, ma'am. But for her, she did not want other scientists to assume that she had particularly choose a intelligent bird for her research. So what will be the answer? Scientists saying that the bird is. Yes. What we need to find it out here. Store assistant pick out a bird at random for the sake of avoiding other scientists. Avoid scientists saying that the bird is dash afterwards. So यहाँ पर क्या लिखा है? She didn't want other scientists to assume that she had particularly chosen a particularly intelligent bird for her research. So what will be the answer? Talent sized brain, man. Yes? Passage. What does it talks about? The bird is dash afterwards. She The had word afterwards is not particularly making sense with the paragraph that Intelligent. has been highlighted. she had particularly chosen a particularly intelligent bird for her research. What will be the answer? Intelligent. Yes, ma'am. Sorry? Intelligent only, no. Intelligent. Study to be fruitless. Study to be fruitless. Why? Bird के बारे में Ma'am, बात हो रही है. Bird is intelligent. Ma'am, but bird is intelligent. Yes, Sense. exactly. That's incorrect. Yeah. Yes. And the word afterwards is not making sense with the entire highlighted statement. Yeah. I think Read we'll have it. to scan more. Read it and then try to understand. Pepperberg purchased Alex from a pet store in Chicago, where she let the store employee choose him because she didn't want other scientists to assume that she had particularly chosen a particularly intelligent bird for her research. जल्दी से find करो. Try to understand. Particular. I'm giving you some time to understand. I want you to find the correct answer. Particularly chosen. Why particularly chosen? Maybe chosen, ma'am. Chosen afterwards. Why? That is what I'm asking कि अगर chosen है तो chosen क्यों है? Intelligent है तो intelligent क्यों है? That is what I am asking. Avoiding other scientists saying that the bird is particularly chosen afterwards. I think that it makes sense. Why?
Why is it so? I want reason. Ma'am, what the mean of afterwards? Like, You tell me what is the meaning of afterwards? ma'am, I think the experiment has happened, and then afterwards, like, say some things are happened, and then we say that afterwards for that. What does your Can you try? question demands? What does your question demands? Ma'am, it's too much confusing. Like, bird is afterwards. Some kind of adjective or characteristic of the bird, maybe. Yes. You need I to think it's understand. walnut-sized brain. Dekho, let's I break mean, it down. walnut-sized brain is the Let's break it characteristic. down. The store assistant pick out a bird at random for her for the sake of avoiding other scientists saying that bird is dash afterwards. So this sentence is actually talking about a simple story. Ki Paperbug did not choose the bird herself, right? A store assistant chose it randomly. Why? क्यों चूज करा उसने? They're talking about scientists. To avoid that criticism from other scientists. Now blank क्या पूछ रहा है आपसे? आपने जब पैसेज को रीड करा, पेपरबर्ग ने खुद से चूज नहीं करा बर्ड को. Ma'am, purchased afterwards, ma'am. Actually, a Paperbug purchased Alex from a pet store in Chicago, where she let store employee choose a हाँ, sim तो because who she did choose? not want. Yes, so who has chosen? Paperbug did not choose the bird herself. A store assistant chose it randomly. Right? क्यों? Yes, To ma'am. avoid that criticism from other scientists because she did not want other scientists. What the blank is asking. What might other scientists say about the bird if she has chosen it herself? Scientists might say that bird is dash. So the blank must be describe the bird, be the quality, be Intelligent. the characteristic. Yes, Particularly intelligent. Yes. ma'am, I don't get it. I think it's too much confusing. Like, main thing is afterwards, ma'am. They totally confuse the whole paragraph. Like, afterwards. Afterwards, you cannot simply ये अलग से कोई afterwards नहीं दिया. Scientist saying that bird is dash afterwards. So he was actually looking for criticism ना कि बाद में scientists क्या बोलेंगे bird के बारे में. That's the reason Ego Paperbug ने खुद से Intelligent choose. Yeah, intelligent. Yes. yeah. आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या है? क्योंकि पेपरबर्ग ने खुद से चूज नहीं करा था बिकॉज ही वॉज एक्चुअली लुकिंग ना कि साइंटिस्ट क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे. तो उसने किसको बोला चूज करने को? स्टोर के एम्प्लॉय को, दैट मीन्स स्टोर के असिस्टेंट को. Yes, saying ma'am. that But bird is I get it. It's intelligent birds. exactly. yeah, ma'am. Afterwards, Intelligent only. you are not understanding the word afterwards का मतलब क्या है यहाँ पर. पेपरबर्ग ने खुद से क्यों नहीं चूज करा था? बिकॉज शी वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि साइंटिस्ट उसे क्रिटिसाइज करेंगे, सो शी लेट द स्टोर एम्प्लॉय चूज द बर्ड. The word Okay. assumption is actually correlating with the word afterwards, because assumption means is like assuming something later, Yes, like but as a assuming and conclusion. afterwards is different, right? Other But in this scientists will summary, be it's okay. correlating. Yes, exactly. So sometimes you And will get we, the most trickiest part. Don't get trapped by ma'am, afterwards we don't need to think. Yeah.
Exactly. Means we no need to think about the afterwards. Exactly. There The sometimes bird there is is a intelligent. precise phrase. Oh, Sometimes So you need to answer would be identify particularly intelligent or just intelligent. particularly intelligent, right? Yes. And even bird is particularly chosen also can be correct. That bird is particularly chosen afterwards. तभी तो उसने choose किया ना, saying that bird will be particularly chosen. So both will be correct here. Sometimes you get the answers very quickly because there is a paraphrasing which is easy to catch. But sometimes you have to devote time. So this is what you need to comprehend more. जब भी हम passage को read करेंगे, we will be reading it very carefully. कुछ लोग जब passage को read करते हैं तो बहुत ही random reading करते हैं. We are not reading. We are actually reading to get the gist of that statement. नहीं तो आपको उसी स्टेटमेंट को 4 बार रीड करना पड़ेगा. रिमेंबर दिस. सो टू अवॉइड दैट 4 टाइम रीडिंग, जस्ट रीड एट वंस. क्लियर? एक बारी में अपने पैरा को, अपनी समरी को रीड करो सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको फाइंड क्या करना है. राइट? So I hope now it's easier for you to find out. Yes, Lavanya, it's done now. I want feedback from all of you. Did you find today's session fruitful? Does it Yes, help ma'am. you a lot? yes. Yes, very No, helpful. ma'am, it's helpful, ma'am. Yes. So I always pick up one GT test and one academic test so that you have an idea कि आपको find क्या करना है. Okay? Now Okay, ma'am. tomorrow's session will be about. Okay. Just give me a second. Yes. Thank you so much for the feedback, because it also helps us to improve and to come up with new sessions in detail. I don't want to give you कि हाँ ये 5 tips हैं ये करो और आपका score आ जाएगा. No, because I believe that do not work. You need to have that time strategy and the ways to find out the correct answer and to understand the phrasing. Listen, IELTS difficult बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन केयरलेस स्टूडेंट्स के लिए जरूर है. अगर आप लोग रोज प्रैक्टिस करते हो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो, आई कैन बेट यू कि अगर आपका बैंड 6 आ रहा है, बैंड 7 गारंटेड है, गारंटेड. बट नो रैंडम गेसिंग, ओनली स्मार्ट रीडिंग विल हेल्प यू आउट. राइट? तो आई बिलीव आज के सेशन के बाद आपके पास क्लैरिटी आई. अब आपको समरी कॉम्प्लीशन इजी लग रहा होगा एंड यू कैन सी दैट यू विल इंप्रूव योर स्कोर डेफिनेटली. राइट? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So thank you so much for staying till the end, and trust me, you all are very serious about band 7, and even I am damn serious कि I want you to attain 7. 7 तो लाने ही लाने हैं. I never want my student to settle for 6 and Ma'am, 6.5. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. Right? Yes. ma'am, I reached my goal like 7.5 That's very good. through with the classes. Mm-hmm. Basically, ma'am, I confusing between the matching feature and flowchart. It's mainly happen, and I don't get it the correct answer. Flowcharts, it means about like some like one detail and after second details. Flowchart meaning events like they happen and they Mohammed, work confusing on all your the time. grammar skills. I confusing नहीं, I am confused. Yeah, ma'am. है ना? आपकी grammar में भी there are lots of errors. Please work on your grammar part and do not worry about it. कल हम matching features ही करने वाले हैं. So upcoming sessions, I'm going to cover the left out topics for reading part. Stay tuned and do attend the session. You will get all your doubts clear. Lavanya, in the application, once you open the application, there is a section called classes.
सो क्लासेस में जाकर आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जो 3 मॉड्यूल्स हो गए हैं, रीडिंग इज स्टिल कंटिन्यू, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इवन ऑन द यूट्यूब आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ये कोर्स 2 Jan से स्टार्ट हुआ था। द कोर्स इज इन टोटल डिटेल। तो आपको, आई वोंट से कि ये 30 क्लासेस वाला कोर्स, ऐसा नहीं मैं प्लान करती। आई ऑलवेज प्लान माई कोर्स इन वेरी डिटेल, कोई शॉर्ट कोर्स नहीं होता। तो 2 Jan से ये कोर्स स्टार्ट हुआ। आई बिलीव 18 to 19 क्लासेस आर ओनली फॉर स्पीकिंग। राइटिंग के देर आर 24 or 23 classes and reading is going on. So after reading, Monday onwards, we will be starting with the listening. Okay? And do not forget to practice from the application. Application से practice करो, आपको कहीं पे कोई कुछ चीज जाने की जरूरत नहीं है। Application में everything is there. And click on the remind me button so that you get notified for the next class. And you can even share the application to your friends also, so that they can also practice. Okay? See you all tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you so much. Bye bye. Bye.